Now, today our topic is isomerism in isomerism. What is isomerism? Right? Isomerism क्या है? देखो बेटा, compounds containing isomerism means कोई भी दो compounds या दो से ज्यादा compounds having कोई भी compound हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला पॉइंट तो यही है, जो कंपाउंड्स है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दो चीजों में डिफरेंस होती है, मैं एग्जांपल से भी बताता हूं। डिफरेंस दो चीजों में, या तो डिफरेंस स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, या तो अरेंजमेंट, जो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो अलग होगा। दोनों में से एक चीज होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ, ये डिफरेंट है, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या होना चाहिए? या स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लीजिएगा। सो कंपाउंड्स जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये पहला क्राइटेरिया है, लेकिन डिफरेंट है या स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। ये दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, और इस फिनोमिनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ CH3, CH2, CH2, CH3। इसी का एक आइसोमर बनाता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट देयर इज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। देखो, इन दो कंपाउंड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक कंपाउंड तो स्ट्रेट है, वन इज स्ट्रेट, अनदर इज ब्रांच्ड, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10। सो ये ब्यूटेन जो है, C4H10 होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन क्योंकि अल्केन में CnH2n+2 जितने कार्बन है उससे अगर डबल +2 होंगे तो अल्केन है। अगर कार्बन में 4 है तो हाइड्रोजन 8 होते तो अल्कीन है, ब्यूटीन है। अगर कार्बन 4 है तो डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, जैसे H6 होगा तो ब्यूटाइन होगा, राइट? सो so 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 these are isomers. Now another one is C double bond C। अगर यहां से मैं कोई भी ग्रुप ले लूंगा, C2H5, यहां से ले लूंगा C2H5, राइट? यहां से ले लूंगा H, यहां से ले लूंगा H। तो ये बेसिकली अगर हम नंबरिंग करेंगे, इथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 की चेन है, ये है हेक्स थ्रीइन। इसी का एक आइसोमर देता हूं, सेम स्ट्रक्चर। देखो डबल बॉन्ड ऐसे ही है, C2H5 भी ऐसे ही है, यहां से भी C2H5 इसके साथ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अब ये जो दो कंपाउंड्स है, इनका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन देखो अरेंजमेंट डिफरेंट है। अगर हम लेफ्ट साइड वाले को देखेंगे कि C2H5 एक साइड में है और H एक ही साइड है डबल बॉन्ड की। अगर हम इसमें देखेंगे C2H5 एक दूसरे के अपोजिट में है,
H और H एक उसके अपोजिट है, स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट अलग है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। सो अगर मैं वापस जाऊं, व्हाट आर नाउ आइसोमर्स? Isomers are compounds having same molecular formula. दोनों में हमने देखा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इन स्पेस। इन ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स बोलते हैं। अब चूंकि हमें देख लिया कि दो है आइसोमर, या स्ट्रक्चर्स तो अलग टाइप है या अरेंजमेंट तो अलग है, इसलिए जो आइसोमर्स है ये दो टाइप्स का होता है, राइट? आइसोमेरिज्म जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप्स का होता है। एक टाइप होता है जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंस क्या चीज है? डिफरेंस किसमें है? स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर्स डिफरेंट, ठीक है। फिर दूसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट है, अरेंजमेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स डिफरेंट है। सो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है। तो जो पहला वन है, जिसको हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, राइट? So what is structural isomerism? Compounds having same molecular formula but different structures and hence different properties. And जो compounds having same molecular formula but different arrangement of atoms or group of atoms in space, ऐसे isomers को बोलते हैं बेटा stereoisomers, और ऐसे isomerism को बोलते हैं stereoisomerism, right? So एक structural isomerism है, एक stereoisomerism है, right? So isomerism is of how many types? Two types. Number one, structural isomerism, and number second is stereoisomerism. Now the next is, बताइए what is structural isomerism और इसके types बताइए। देखो structural isomerism मैंने कहा, what is structural isomerism? Compounds having same molecular formula but different structures and hence different properties are known as structural isomers, and this phenomenon of existence of structural isomers in organic compounds is known as structural isomerism, right? Now listen here, this structural isomerism is of different types, ठीक है ना? ये structural isomerism जो है ये different types का होता है। अब देखो बेटा, सबसे पहला टाइप इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। देखो, these isomers, structural isomers, differ in the arrangement of carbon atom in the chains. So chains are different. जैसे chains are different in these isomers. Simple. Let us take an example. I am taking butane. Butane के दो isomers, CH3, CH2, CH2 and CH3. It is normal butane and and isobutane. This is isobutane. So these are normal butane, isobutane. Normal butane, straight chain butane. If it's a branch chain, it's known as isobutane. These are examples. So butane is how many chain isomers? Two chain isomers. Normal butane and isobutane. In the same way, if we take pentane, pentane has three. As the number of carbon atoms increases, number of chain isomers also increases. So this is normal pentane, straight chain pentane. This is one branch, voila, and it is known as isopentane. This is isopentane. So pentane has three chain isomers. Very important.
and this is neopentane when there are two branches. So this is neopentane. So pentane is having how many isomers? Three. Kya kya? One is normal pentane. All right. Second is isopentane. And last one is neopentane. Neopentane. So these are chain isomers of pentane. All right. So pentane has three chain isomers: normal, iso, and neo. Right. This was first. Now, second type of structural isomerism is position isomerism. As the name suggests, position isomerism का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन डिफरेंट है. अब पोजीशन किसकी डिफरेंट है? पोजीशन डिफरेंट है डबल बॉन्ड की, पोजीशन डिफरेंट है ट्रिपल बॉन्ड की, पोजीशन डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप की. जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूं. So what these isomers differ in the position of multiple bonds or position of functional groups. Let us take an example. CH2 double bond CH, single bond CH, 2 CH3. This is butene. Now its position isomer is butene. CH3 CH, double bond CH, single bond CH3. Both are butenes, but one is butanene, the butene. So position of double bonds after one carbon, and second is butene. Position of double bond is after carbon number second. So these are position isomers. In the same way, if I take CH3, CH2, CH2OH, this is propanol, and its position isomer is propan-2-ol. Both have same molecular formula, but where is the difference? Difference lies in the position of OH group, functional group. One is, this is propanol, 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 and another is, this is propan-2-ol. All right, propanol and another is propan-2-ol. So these are position isomers. So position isomers differ in the position of multiple bonds or position of functional groups. Remember. Now, next is third, functional isomerism. So what are functional isomerism? Functional isomers differ in the nature of functional groups. Functional isomerism. So functional group ही अलग होगा. Let us take example. So functional isomer, suppose I am taking CH3, CH2, OH, it's ethanol. Now its functional isomer is CH3, OCH3. It is ether. एक का नाम है ethanol. So ethanol and ethanol is alcohol, and ethers, methoxymethane, dimethyl ether, methoxymethane is IUPAC name. They are functional isomers, right? In the same way, I'm taking another example. CH3, CH2, CHO is functional isomer of this compound, CH3, C double bond O, CH3. पहला कंपाउंड है प्रोपेनल. प्रोपेनल, प्रोपेन की चेन है, वन पर अल है, it is propanone. They have same molecular formula, but where is the difference? They have different functional groups. Propanol has aldehyde group, propanone has ketone group, right? So this was third type. Now the fourth type is metamerism. So remember, my dear students, metamerism is only present in ethers. Ether में ये type of isomerism होता है. The isomers differ in the nature of alkyl groups on either side of oxygen atom, because ether में O होता है center में. अब इसके side में कौन से alkyl groups है ये differ कर सकते हैं. Like this, अगर CH3O, CH2, both of these compounds have same molecular formula, but remember, name is different.
So when name is different, it means they have different properties. They have ether, both में ether ही है, but they differ in the nature of alkyl groups, in the size of alkyl groups on either side of oxygen atom. So पहले का नाम क्या आएगा? शाबाश, it is ethoxyethane. It's ethoxy. एक अल्काइल ग्रुप, छोटा अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लिया जाता है अल्कोक्सी, और दूसरे की चेन होती है, जैसे दो की चेन तो इथेन आएगा। यहाँ छोटा इधर से है, इसका नाम आएगा मीथोऑक्सी, और चेन बनेगी 3 कार्बन की, तो इट इज प्रोपेन, मीथोऑक्सी प्रोपेन। So they are metamers, that is metamerism. Now next is tautomerism. Tautomerism is another type of structural isomerism. Remember, in tautomerism, what happens? There's rearrangement, internal rearrangement takes place. Let us suppose I'm taking a compound CH3, C double bond O, CH3, right? Propanone लिया, ketone लिया. I have taken propanone. अब प्रोपेनोन में ये H यहां से उठ के, कार्बन से उठ के तीसरे एटम तक चला जाता है। तीसरे कैसा? ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, कोई भी एटम, इट्स नॉट नेसेसरी कार्बन होना चाहिए। 3 फर्स्ट एटम से तीसरे एटम तक चला जाता है H। तो जब H वहां चला जाएगा, व्हाट हैपेंस? CH3, C सिंगल बॉन्ड OH, और यहां से डबल बॉन्ड बनेगा CH2। बट रिमेंबर, दीज टू कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टिबल। तो ये बन गया, इसका नाम नंबरिंग करेंगे यहां से। let us number it from this end, 1 2 3. it is propene to all, prop के बाद 1 के बाद इन, और 2 के बाद all है। so this is known as ketone. ketone से ketoenol, n और all बना, ketoenol रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन, ये दोनों कंपाउंड जो बने ड्यू टू इंटरनल rearrangement, 1 to 3 H प्लस शिफ्ट हुआ। H प्लस शिफ्ट की वजह से जब भी कंपाउंड बनता है, वो इसका टॉटोमर कहलाता है। These two compounds are tautomers. So these isomers are formed when there is 1 to 3 H plus shift in a reactant, right? Now the last one is ring chain isomerism. रिंग और चेन में, एक साइड में रिंग होगा, एक साइड में चेन होगा। देखो बेटा, रिंग किस में होगा और चेन कौन सा होगा? सिंपल, पहले मैं दिखाता हूं। देखो, रिंग होगा साइक्लोअल्केन का, साइक्लोअल्केन CnH2n फॉर्मूला, और यहां से CnH2n फॉर्मूला होता अल्कीन। इनके बीच में रिंग चेन आइसोमर हो सकता है। दूसरे एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, साइक्लो अल्कीन एक साइड में और दूसरे साइड में अल्काइंस, राइट? सो इनके बीच में रिंग चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबिलिटी है। देखो बेटा, फर्स्ट वन साइक्लोअल्केन, कोई भी ले लो। आई एम टेकिंग CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, साइक्लोब्यूटेन ले लिया मैंने, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। अब देख लो, यहां से ब्यूटीन लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, they have same molecular formula, C4H8 both. Sorry, one is cyclobutane, another is butene. They are ring and chain isomers. In the same way, I can take cyclo, suppose हम ऐसे भी लिख सकते हैं, it's not necessary, मैं ऐसे ले रहा हूं, ये हो गया पेंटेन, किसी जगह पर डबल बॉन्ड, it becomes cyclopentein, cyclopentein, साइक्लोपेंटीन, और इसको कहते हैं ये CH2 CH2 CH CH CH2, एंड यहां से मैं ले लूंगा पेंटाइन, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। जो ये बनाए मैंने, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया ऐसे साइक्लोपेंटेन। सो दीज आर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो आज हमने क्या क्या किया?
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या, इसके क्या क्या टाइप्स है. जस्ट a revision. Isomerism, compounds having same molecular formula but different structures or arrangement of atoms or group of atoms in space, right? Second मैंने कहा, ये मैंने एग्जांपल दी थी. फिर मैंने कहा था isomerism is of two types. One is structural isomerism, having same molecular formula but different structures and hence different properties. And दूसरा बताया stereoisomerism, having same molecular formula but different arrangement of atoms or group of atoms in space, right? इसके बाद हमने किया था what is structural isomerism. Structural isomerism के types. Chain isomerism, isomers differ in the arrangement of carbon chains, right? Then हमने किया position isomerism. Isomers differ in the position of multiple bonds or position of functional groups, right? इसके बाद हमने किया functional isomerism. Functional isomerism हमने देखा isomers differ in the nature of functional groups. Alcohols and ethers are functional isomers. Aldehydes and ketones are also functional isomers. इसके बाद हमने किया metamerism. In metamerism, this type of isomerism is present in ethers. Isomers differ due to difference in the nature of alkyl groups on either side of oxygen atom, right? इसके बाद हमने किया after metamerism tautomerism. This type of isomerism is possible arise due to rearrangement 1 to 3 H plus shift in a reactant, right? Example ketoenol rearrangement. Whenever in a rearrangement reaction there is 1 to 3 H plus shift, we say it is tautomerism because tautomers are formed. और लास्ट में किया मैंने ring chain isomerism. In ring chain isomerism, cycloalkanes and alkenes are ring chain isomers. In the same way, cycloalkenes and alkynes also ring chain isomers. And I have then given these examples. This was all about isomerism, types of isomerism, structural isomerism. Hopefully, all of you might have understood it. And in the next lesson, next topic, or next class, we are doing stereoisomerism. Thank you. God bless.